So we will look at those investigations later on. So why am I stressing so much on these things? Because they are important. ये है कि when you read a disease from अच्छा I'm sorry जिसका mic mute नहीं kindly mic mute करें काफी शोर आ रहा है पीछे से so I'm not able to speak. Thank you very much. So why am I focusing on these things? When you read a disease from a book, you can learn pathology. आपको थोड़ी बहुत etiology याद आ जाती है, थोड़ी बहुत pathophysiology. Those are frequently not the things which are tested. Those are very important for concepts, but after you have developed those concepts, you need to know what you will do with a patient. आपने patient के साथ क्या करना है, how you will manage that patient. And for that, you need to have a basic outline of कि examinations मैंने कौन सी करवानी है, कौन सी करनी है इस patient पे, और फिर मेरे differentials की basis पे मैंने इनसे क्या investigations करवानी है अगर मेरा diagnosis clear नहीं है, या फिर मैंने कौन सी investigations करवानी है अगर मैंने इसी diagnosis के ऊपर इस patient को manage करना है. If you think along those lines, तो काफी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी. So now that our patient has presented with these symptoms, gradual loss of vision, glare, glasses change, etc., these are these investigations which we will perform. हम direct distant ophthalmoscopy पे जल्दी से देख लेंगे. कहीं होता है कि practice होती है routine practice के there's no need to perform an ophthalmoscopy क्योंकि slit lamp examination तो लाजमी कर रहे हैं. तो slit lamp examination आप करवा लेंगे. लेकिन उससे पहले visual acuity, extraocular movements, light reflex, IOP to glaucoma, ये standard practice हैं जो आप करते हैं. But specifically, slit lamp examination for this our case is very important. Blood test हमने बात कर ली है, इन 3 पर हम आते हैं. So we have 3 cases और title में तो ऐसे एक पे नाम लिख दिया है. मैं आपसे पूछूंगा ये क्यों है. Now that you've seen the name of this disease. So moving on to our first disease or our first case of today. This patient, he presents to you with gradual loss of vision. He presents to you with glare, and he presents to you with a sudden or a slight improvement in his vision. He was hypermetropic, and his vision has somewhat improved over the last couple of months. So on examination, when we perform a slit lamp examination of this patient, हमें ये नजर आता है. What is abnormal in this examination? Let's start with what is normal in this examination. So we can see that the eyelashes are normal. We can see that all of this conjunctiva is normal. The cornea, these are the normal parts. And we can appreciate the details of the iris as well. There's no muddiness, there's no hypopyon, and no etc. So the anterior compartment of the eye is clear. हमें पता लग गया कि इसमें अभी तक कोई गड़बड़ नहीं है. अगर corneal edema होता यहाँ पर, तो we would have seen corneal haziness. So that isn't present. This was the examination which you performed. What do you see in examination? क्या नजर आ रहा है आपको examination पे? What is abnormal in this examination? The yellow lens. There's a lens is yellow. Okay, there's a yellow opacity and a large yellow opacity just behind the iris. So it's a yellow lens. Okay. Now when we perform a close-up slit lamp examination, थोड़ा सा करीब से इसको देखते हैं, तो what is this beam of light? ये किस चीज को indicate कर रही है? Okay, this is the cornea. Okay, this is the anterior most beam of light, and this indicates the cornea. So this is the anterior chamber. ये iris के ऊपर आ गई beam of light यहाँ पर, and then this line, this boundary, it is the
Capsule. It is the capsule. Okay, it's the lens capsule. This yellowish opacity, which over here, do you think that it is present at this area, which is the lens capsule? It is present at the lens capsule. इस तरह की opacity No. मौजूद है? No. No. So it's not an anterior capsular cataract. हमें पता लग गया कि क्या नहीं है. Secondly, capsule के बिल्कुल नीचे is the material subcapsular भी नहीं है. So it's most probably localized. It's not subcapsular and it's not capsular. तो हमें दो चीजें पता लग गई कि नहीं है. अब हमारे पास तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, कॉर्टिकल है या न्यूक्लियर कैटरैक्ट है. ओके, तो दिस कैटरैक्ट, इफ यू कैन सी क्लोजली द पेरिफेरल पार्ट्स, अब पेरिफेरल पार्ट्स पे आपने थोड़ा सा गौर करना है, दे आर आल्सो क्लियर समवट. Okay, this was the capsule, this was the subcapsular area, and most of the cortex is also clear. So this opacity is a, कौन सा cataract होगा फिर ये? Nuclear. It's a nuclear cataract. So this was a nuclear cataract. This patient has presented to you with a nuclear cataract. Now you've seen that how easy it is to locate or classify, diagnose a cataract based on the anatomical causes. This is a senile nuclear cataract. What is the color of this opacity? Yellow. It's a yellowish cataract. So this part is yellow, the peripheral part is somewhat brown, दरमियान में थोड़ा सा orange भी है. So if a cataract, if a nuclear cataract it has this color, a brownish है, so it's called a cataract brucensa. मतलब it's a buzzword, मुझे बहुत फजूल लगता है, and I don't find any meaning to it, but it is what it is. Brucensa, इस तरह कुछ spelling इसके बनते हैं. This is a word, cataract brucensa और cataract brucens. तो आप इसको पढ़ ले, nuclear cataract की heading में नीचे लिखा होता है. So this is brucens because brown. I think it's Latin for brown. Cataract brucensa, it's a nuclear cataract which is brown in color. जो आपको brown लगे. So similarly, if it was black in color, if this opacity would have been black in color, it would have been called, क्या कहा जाता है इसको? Anyone knows? Nigra. Nigra. Okay, black in color. So if it was black in color, it would have been called a cataracta nigra or cataract nigra. आप इसको देख के मुझे बता दें क्या spelling है ताकि मैं सही. This is a nuclear cataract. The senile cataract can either be cortical or it can be nuclear. This is a nuclear cataract. Why? Because the opacity it is located or limited to the nucleus. And what is the pathology behind this nuclear cataract? Main pathology behind nuclear cataracts is sclerosis of the nucleus. Sclerosis or hardening. Sclerosis or hardening, it causes disruption in the fibers, which leads to formation of an opacity. So ये थोड़ा सा इसके साथ एक association थी. So you have seen a nuclear cataract. ये slit lamp examination है nuclear cataract. Moving on to this cataract. हम थोड़ा सा इस cataract को देख लेते हैं अभी. We've seen this examination. Brucent cataract. Yes, this is the term. Cataract brucent. Brucent cataract and similarly black को शायद nigra ही कहते हैं. So I will write that down later. Now, what is in this examination? What is in this slit lamp examination? क्या हमें नजर आ रहा है? So the rest is normal. Sclera is normal. Conjunctiva is normal. Cornea is clear. Cornea भी clear है. So where is the iris in this case? Iris कहाँ है? Iris है. Iris है ना? This is the iris. Brown.
ठीक है, दिस इज द iris. So don't confuse कि इसमें iris नहीं है तो this is a corneal opacity. The iris is visible. This is the iris. इसको थोड़ा सा करीब से देखते हैं, हमें देखने नजर आ जाएगा. And why is this iris so dilated? प्यूपिल नहीं नजर आ रहा. Pupil नहीं नजर आ रहा. ठीक है. Iris ये है. This is the iris. ठीक है. Normally iris is a lot larger. तो it's dilated. This is the pupillary margin. ये सारा कुछ pupil है जिसके अंदर से हमें नजर आ रहा है. Now why is this happening? ये क्यों हो रहा है? अगर किसी बंदे की आंखों में आप लाइट मारते हैं, if you shine a bright light into the eyes of a person, what is the normal response? Pupillary constriction. Pupillary constriction. Why is the pupil of this person not constricting even though a sharp slit of light from a lamp is being illuminated on his eye? And this is a sharp beam of light is being illuminated directly. तो एक तो कॉज हो सकती है कि द कैटरेक्ट सो हुए दैट उसका रिफ्लेक्स ही नहीं आ रहा. तो अदर देन दैट इसको रिफ्लेक्स अगेन मिल रहा है. व्हाट इज द कॉज दैट हिज प्यूपिल इज सो डायलेटेड? अगर इनपुट ना मिल रहा होता तो इट वुड बी अनरिएक्टिव, नॉट डायलेटेड. ये डायलेटेड क्यों है? साइनिकी फॉर्मेशन हो रही है. नहीं साइनिकी फॉर्मेशन नहीं है. हमने करवाया है डायलेट. सुबह जब ये आया था पेशेंट क्लिनिक में तो ही वाज नॉर्मल. नाउ वी परफॉर्मिंग the examination, his eyes are dilated. तो क्या किया है? What have we done to this patient? That we seeing such a नजर आए हमें Drops सही. डालते हैं. हाँ. drops डालते हैं. ठीक है. mid-dresses using atropine or homatropine, cyclopentolate, tropicamide. Mid-dresses is crucial and it's essential for ocular examination. That is why this pupil is so dilated. ठीक है. इस opacity को अपने corneal opacity के साथ confuse नहीं करना. This is not the nimbus, this is the iris. And the iris is so small, the pupillary margin is so large because of mydriasis. Parasympathetic constriction नहीं हो रही. The sympathetic dilation is unopposed. That is why it is dilated. Now look at the opacity. ठीक है. Where do you think in this slide the opacity is? This is the slit of the cornea. जो cornea पे आ रही है. This is the anterior chamber, and this is the capsule of lens. ठीक है. This is slits आ रही नजर. This is the cornea. ये anterior chamber है इन दोनों के दरमियान. It's clear क्योंकि वैसे इस तरह नहीं slit में कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा. Light किसी भी जो fall नहीं कर रही. This is the capsule. And the rest of it is the cornea. So look at it again. And where do you think the opacity lies this time? So where is this opacity located? Subcapsular. ठीक है. So it's not the capsule because the capsule is relatively clear and subcapsule भी थोड़ा बहुत clear है. तो थोड़ी सी ज़्यादा. This is a cortical cataract because the cortex is involved. Okay, look at this cataract again. इसको आप दोबारा देखें. You see how nucleus is only involved, the rest is completely normal. और slit lamp पे आपको light पे उन beam में नजर आ रही है वो चीज. However, in this case, general examination में the opacity is very clear, it's very evident. Secondly, on a closer slit lamp examination, जो disruption हो रही है beams की वो देखें यहाँ पे आ रही है. This is a cortical cataract. So, these were the two types of important cataracts which are important when we discuss a senile cataract. First is a nuclear cataract, and the second is a cortical cataract. However, there are some stages in a formation of a nuclear cataract. Cortical cataract. Cortical cataract बनने के कुछ stages हैं. There are 4 stages through which cortical cataract passes. उसी हिसाब से इनकी clinical manifestations होती हैं, examination पे आपको नजर आता है and all.
What is this stage? हमें ये पता लगाना है which stage at this is this cortical cataract present at. So for that we need to know what are the normal stages. वैसे कौन सी stages होती हैं cortical cataract की? What are the 4 stages of a cortical cataract? क्या है? कोई बुक से देख के बेशक बता दे. Anyone? Lamellar separation. First is lamellar separation, that is good. The second is intumescence or intumescent cataract. The third is This Immature. immature. Sir, second sun incipient है. Second fourth Intumescent is fourth. Intumescent is fourth. मुझे कोई रिपीट कहते बिकॉज इट्स मेरे पास डिफरेंट लिखे हुए हैं तो जो तो ही में लिखे हैं आप बता दें. सर नहीं, इट्स भाई कहने से मैं थोड़ा हो जाता हूँ ज़्यादा. तो व्हाट आर द स्टेजेस? द फर्स्ट इज lamellar separation. ठीक है. द सेकंड इज incipient. incipient. The third is Immature. The fourth is Intumescent. intumescent. And the final is, इसके बाद भी कोई होती है. Mature cataract. Mature लिखा हुआ है. And then there's one more. Hypermature stage of mature. बिल्कुल. So generally when we ये 5 stages हैं and they all seem very confusing at first. So let's simple them down a bit. होता क्या है? At first, there are 3 groups. हम इसको कर लेते हैं. The first is an immature cataract. The second we have is a mature cataract. And the third we have is a hypermature cataract. इनमें फर्क क्या है? क्या किस्सा कहानी है? What is the difference between all of these terms? और ये बाकी सारी terms कहाँ पे fit आती हैं? This all relates to the pathology of a cataract. अब हमने nuclear cataract में देखा था कि the main pathology in a nuclear cataract is sclerosis or hardening. The main pathology in case of a cortical cataract to pathophysiology, that is hydration. Hydration का मतलब है कि water it leaks inside the cortex. उसी के साथ थोड़ी सी protein की generation होती है. And that causes an opacification. And all of these stages, they are directly related to that pathophysiology. So, थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इस पिक्चर के साथ relate करते हैं. At first, listen. So this is our normal nucleus. Let's just say that somehow this nucleus is being hydrated. When this nucleus is being hydrated, we know that there are normal parallel fibers present inside the nucleus, inside the cortex. Sorry, cortical cataract. In the cortex, there are parallel fibers. They are arranged in parallel lamella. So if water it starts to seep in through these lamellae, what will happen? The first stage will happen. That is the stage of lamellar separation. Okay, that is the stage of lamellar separation. उसको हम कहते हैं lamellar separation. अब ये हमें slit lamp पे कैसे नजर आती है? It's not important in our case क्योंकि इतना इसके बारे में कोई पूछता नहीं है और हमारे लेवल से ऊपर हो जाता है. तो further ठीक है lamellar separation. अब lamellar separation बढ़ रही है. Usually it starts at the periphery. ठीक है, यहाँ पे शुरू हो जाएगी थोड़ी बहुत, यहाँ पे हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट होगी. तो it gives a spoke-like appearance to the cataract when we view it from the front.
अभी इसमें स्पोक लाइक पेरेंट्स नहीं है. आई शुड प्रॉब्ली शो यू. मिल जाती है मुझे. This is somewhat a good picture. So when it's in an animal की इंसान की आंख नहीं है, परेशान नहीं होना. So as the lamellar separation progresses, spokes they start to appear at the periphery. Okay? This is an incipient cataract. Now secondly, what will happen is that due to the hydration, जो hydration जिसकी वजह से lamellar separation हो रही है, अगर उस हाइड्रेशन की वजह से बहुत ज्यादा हो तो लेंस को क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ साइज लेंस स्वेल कर जाएगा. ठीक है. नाउ इफ दैट लेंस इट स्वेल्स, दैट स्वेलिंग इज कॉल्ड इंट्यूमेसेंस और उसको कहते हैं इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट. दैट इज इंट्यूमेसेंट कैटरैक्ट. अब इस स्वेलिंग की वजह से क्या हो सकता है? देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट टू दिस स्वेलिंग ऑफ द कैटरैक्ट. हमने कहा कि हाइड्रेशन स्टार्ट हो गई है लेंस की, कॉर्टेक्स की. नैट हाइड्रेशन कॉजेज लेमेलर सेपरेशन. पेरिफेरी से थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ किस्सा कहानी. स्पोक से अपीयर होना शुरू हो गया. इंसिपिएंट कैटरैक्ट बन गया. नाउ इट हैज स्टार्टेड टू स्वेल. दैट स्वेलिंग, when that swelling is present, there is very hydration is present. We call as an intumescent cataract. Now what is an important complication? What is a side effect? इस swelling की वजह से क्या हो सकता है? What can happen? ग्लाइकोमा डेवलप हो सकता है. ग्लाइकोमा डेवलप हो सकता है. How can that glaucoma develop? कैसे हो सकता है? वो एंगल क्लोज हो जाएगा. इरिडोकॉर्नियल एंगल क्लोज हो जाएगा. बिल्कुल एंगल क्लोज हो जाएगा. Now in the normal cornea, in the normal eye, this is the lens, ये iris है. This is the cornea. थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे पड़ा होगा iridocorneal angle. This is the iris, or this is the angle, right? Now if this lens swells, what will happen is that it will push this lens. This lens will push the iris against the cornea. उसकी वजह से angle close हो जाएगा. If this happens and the IOP is raised, we call this glaucoma. क्या कहते हैं इस glaucoma को? Angle closure glaucoma. Angle closure glaucoma बिल्कुल है, but a specific term is used for this angle closure glaucoma. That it is called phacogenic भी होते हैं. It's called phacomorphic glaucoma. इसमें 2-3 और terms भी होते हैं, मैं आपसे भी डिस्कस कर लेता हूँ. This is called a phacomorphic glaucoma. Okay? Phaco means lens, morphic due to the morphology. This is a phacomorphic glaucoma. फिर उसके बाद स्टेज आ जाती है मैच्योरिटी. अब ये जो बाकी सारी स्टेजेस हैं इसको हम ग्रुप कर लेते हैं यूजुअली अंडर द टर्म एन इमैच्योर कैटरैक्ट. उसके बाद स्टेज आ जाती है मैच्योरिटी की और फिर उसके बाद स्टेज आ जाती है हाइपर मैच्योरिटी की. तो मैच्योर कैटरैक्ट क्या होगा? मैच्योर कैटरैक्ट वो होगा इन विच ऑल ऑफ द कॉर्टेक्स इज इन्वॉल्व्ड. If this circle is the nucleus and the rest of the whole of the cortex is involved, this is called a mature cataract. Mature cataract वो होता है. An immature cataract does not involve whole of the cortex. तो वो हो गया हमारा फिर second thing, mature cataract. अब hyper mature cataract क्या होता है? हाइपरमैच्योर कैटरैक्ट ये होता है कि देयर इज प्रोटियोलाइसिस, स्टिफनिंग हो रही है, हार्डनिंग हो रही है, और जो चेंजेस इसमें कॉर्टेक्स में स्टार्ट होती हैं दे अल्टीमेटली दे आल्सो अफेक्ट द न्यूक्लियस. तो इस तरह नहीं है कि कॉर्टिकल कैटरैक्ट में न्यूक्लियस अफेक्ट नहीं होता. कॉर्टेक्स से स्टार्ट होता है. जब कॉर्टेक्स सारा खराब हो जाए तो फिर कुछ चेंजेस न्यूक्लियस में ट्रांसमिट होना शुरू हो जाती है. न्यूक्लियस स्क्लेरोसिस भी स्टार्ट हो जाती है. What happens is that after this whole cortex is opacified, उसकी hydration हो गई है, protein regeneration, all that stuff, pathophysiology इसकी important है. उसके बाद it starts to shrink. थोड़ा सा shrink करना शुरू हो जाता है.
and that stage is called a hypermature cataract. अब कभी कभी ये होता है कि पूरा कॉर्टेक्स लिक्विफाई हो जाता है और दरमियान में न्यूक्लियस जो है वो रहता है सॉलिड. So if the cortex is liquid and of a lower density and the nucleus is solid and of a higher density, so what do you think will happen to the nucleus? नीचे हो जाएगा. नीचे गिर जाएगा. It will fall down. It will fall down. ठीक है. So what is this cataract? ये इन 3 stages में कौन सा आता है? This cataract. Is it immature? Is it mature? Or is it hypermature? Mature. Okay, it's a mature cataract. Why is it a mature cataract? All of the cortex is involved. All of the cortex involved. So this is a mature cataract. Now coming on to this case, तो उसने सारा बड़ा सारा नाम लिख दिया है. So this is a hypermature cataract. We will see the examination. एक बार मुझे मौका मिले इसको ठीक करने का. This is a hypermature cataract. Look closely. So there are 2 arrows which he has pointed out. There's no clearing behind the second beam जो है. Second beam इसने दिखाई है यहाँ पे. Look at this. There is no clearing. This is the beam of the cornea. This is the anterior chamber, and behind this there is an opacity. There is no clear part. That's why it's appearing very bright. So what are these 2 arrows which have been pointed out? What is this? The first. Cortex. This is the cortex, and the second. Nucleus. This is a nucleus. So what has happened in this case? In this case, the cortex has completely liquefied and the nucleus, it has fallen down due to gravity. और gravity की वजह से it appears as if it's a sun and the sun is rising. ऐसे लग रहा है दूसरे की आंख में सूरज एक तलू हो रहा है या गरूब हो रहा है, कुछ हो रहा है. There's this orange opacity, semicircular है और उसके ऊपर बाकी lens है which is lighter in color. So this is a cataract in which the cortex has liquefied and the nucleus has fallen down below. That is why it is giving us a semicircular appearance. This cataract, this hypermature cataract, it is termed, what is it termed? इसको हम क्या कहेंगे इस cataract को? Morgagnian hypermature cataract. This is called a Morgagnian cataract. ये Morgagnian cataract है. These are the stages and the types of a senile cataract you have to remember. First is a senile nuclear cataract. Nuclear cataract में only the nucleus is involved. Okay, it starts with the nucleus. If the nucleus is brown in color, the cataract lucents कहते हैं इसको, lucents. And if it's black in color, it's a cataract nigra. So pathophysiology is sclerosis or hardening of the nuclear material. किसी के माइक से शोर आ रहा है, kindly mic अपना mute कर दें. That was nuclear cataract. The other is an immature, the other is a cortical cataract. Now cortical cataract, it can be immature or it can be mature. I'm sorry, मुझे आपको जो भी जिनका भी है सारे अपना mute कर दें क्योंकि काफी शोर आ रहा है. I'm not able to concentrate that much. Thank you. तो जब मैं पूछूं तो फिर बेशक आप तब म्यूट करेंगे वरना काफी डिस्टर्बेंस हो रही है. तो this is a cortical cataract in which a cortex involved. So cortical cataract, it can be mature, the first thing, it can be immature or it can be a hypermature. So this is all related to the pathophysiology. An immature cataract, the whole of the cortex is not involved. Lamellar separation होती है स्टार्ट में हाइड्रेशन की वजह से. The lamella, the layers of the cortex, the fibers जो parallel arrange होते हैं जिनके arrangement की वजह से the cornea, the lens is transparent
उनकी अरेंजमेंट खराब होती है, लैमेलर सेपरेशन होती है, स्पोक्स अपीयर होना शुरू हो जाती हैं, द कैटरैक्ट, द लेंस इट स्टार्ट्स टू स्वेल एंड दीज आर स्टेजेस ऑफ एन इमेच्योर कैटरैक्ट. उसके बाद इफ इट इन्वॉल्व्स द होल cortex, it's called a mature cataract. And after a mature cataract has formed, if it shrinks, if it liquefies, and if the nucleus it falls down, then we term it as a Morgagnian cataract. So this was senile cataract. These are the important things you have to remember about a senile cataract: nuclear and cortical. So now that we have our differential diagnosis, हमारे पास 3 diagnoses आ गए ना, एक nuclear cataract आ गया, एक cortical cataract आ गया, एक Morgagnian आ गया. अच्छा, Morgagnian differential से पहले एक और चीज डिस्कस करते हैं. Let's just say that this cataract, the lens capsule it ruptures. Lens capsule rupture कर गया. What do you think will happen or can happen as a possibility or as a complication? Lens will fall out. Lens will fall out. All right. If I say the rupture is very small, the lens, the capsule has ruptured. It's very small, so the nucleus is still inside, and most of the cortex is still inside. However, fluid or particles from the cortex, this yellowish material, they're leaking out inside the anterior chamber. तो क्या हो सकता है? Deflation. Deflation, all right. और क्या हो सकता है? IOP रेज हो जाएगा. IOP कैसे रेज होगा? लिक्विड कॉर्टेक्स अगर बाहर आ रहा है तो. बाहर आ रहा है तो कैसे IOP रेज होगा? क्योंकि इन अ क्लोज कंपार्टमेंट अगर हम पूरी आईबॉल को क्लोज लें तो वो मटेरियल अगर लेंस में रहे या इंटीरियर चेंबर में रहे तो बात तो एक ही है ना, क्योंकि इंटीरियर कंपार्टमेंट में रह रहा है. वो जहाँ से निकल के इंटीरियर चेंबर के अंदर आएगा वो पीछे थोड़ी जगह खाली हो जाएगी, वो छोड़ के इधर आगे आ जाएगा. तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएगा, उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग कम हो जाएगी या एक बैलेंस हो जाएगा प्रेशर. तो एंटीरियर चेंबर में आने की वजह से IOP रेज नहीं होगा, लेकिन उसके बाद कोई कहानी होगी. व्हाट इज दैट स्टोरी? सर ट्रैबिकुलर मेशवर्क में अगर सेल डेब्रिस जो उसको ऑक्लूड कर दे. Leakage of proteinaceous material into the meshwork, into the lens. It will into the chamber, into the AC, will block the trabecular meshwork. इसकी वजह से जो glaucoma होगा, the raise in IOP, what will that glaucoma be called? Inflammatory glaucoma. Inflammatory glaucoma. Is inflammation occurring in this case? No. No. तो inflammatory glaucoma में भी केवल होता है. Phecomorphic हम डिस्कस चुके हैं. Inflammatory तब होता if concept inflammatory भी same है, कि instead of the proteinaceous material, the cells, the inflammatory cells are blocking the trabecular meshwork. तो inflammatory glaucoma में वो कहानी होती है. इसमें proteinaceous material which is coming from a ruptured lens that is blocking the trabecular meshwork. So this is also a phacoglaucoma, but it is termed phacolytic glaucoma. In terms से मुझे शुरू में काफी कंफ्यूज किया था कि what's phacolytic, what's phecomorphic, what's phacoanaphylactic, काफी ज़्यादा टर्म्स हैं. तो दो अभी हमने डिस्कस कर ली. This is a phacolytic glaucoma. Phaco means lens, lytic means lysis, or in simple terms rupture. अभी हम बात. A glaucoma which occurs due to the rupture of the lens is called a phacolytic glaucoma. This is a phacolytic glaucoma. So similarly, a glaucoma which occurs due to the shape or morphic or morph or the body of the lens. Morphics मैंने इसलिए याद किया, morphology, तो structure की बात हो रही है. The phaco means lens. It's glaucoma caused by the structure of the lens. This is phacomorphic, जिसमें lens की swelling की वजह से angle block हो रहा है. और वो glaucoma जिसमें ये rupture कर रहा है और उसकी वजह से proteinaceous material वो जा रहा है trabecular meshwork को block कर रहा है, and that is causing a raise in IOP and glaucoma. We call it as phacolytic glaucoma. So these are the two glaucomas which are secondary to ocular disease, but they are secondary to specific ocular diseases which are cataracts. Cataracts में ये दो glaucomas हो जाते होते हैं. इसके अलावा एक और फेकोज हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे. अब ये दो रेलेवेंट है.
तो ये आपको MCQs में इसी तरह ही आता है. Patient presents with a Morgagnian cataract और आपको description दे रही होगी कि the nucleus is sunken, he has glare or he is unable to see eye on examination. The nucleus is sunken, there is a large opacity, and the IOP is raised. So what is raised? आपको hint थोड़ी सी और दे देगा कि it appears that the capsule has ruptured or something is blocking the trabecular meshwork. What is the cause? What is this disease called? It's phacolytic glaucoma. So now that we have seen 3 of these diseases, we have to treat our patient. इस patient को हम कैसे treat करेंगे? How will you treat these patients? Phacoemulsification. Phacoemulsification क्या है? सर्जरी है. तो सर्जरी. तो फर्स्ट एक चीज हमने बात कर ली, सर्जिकल मैनेजमेंट. और हम क्या करेंगे? और हम कुछ कर सकते हैं? दैट इज द क्वेश्चन. हम यूजुअली बात करते हैं तो सर्जरीज आर द लास्ट ऑप्शंस. पहले हम प्रिवेंटिव या जनरल ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, देन वी गो टू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, देन वी गो टू मिनिमली इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स, या कोई प्रॉपर छोटा मोटा प्रोसीजर करना हो, देन वी मूव ऑन टू सर्जरीज. Is there anything we can do before surgeries? No. सारे agree करते हैं इस बात से? Manage the If glaucoma. IOP is raised, then we can give drugs that lower the intraocular pressure. All right. So medical treatment is not specifically for the cataract, is what you're saying. It's for the IOP. It's for the glaucoma. And secondly, if there's a biochemical cause, the biochemical cause की medical treatment आप कर सकते हैं. And that is the principle when you're managing a cataract. After it has formed, there's no reversing a cataract. There's no medical reversal of a cataract. You can treat the glaucoma, phacolysis, आप उसको manage कर सकते हैं. उनकी अपनी treatments आएंगे, which we will discuss in glaucoma. Otherwise, you need to operate and you need to get rid of this opacity in order to restore vision and function. And that is why a cataract does not have any medical management. Cataract needs to be surgically treated. तो surgical treatment हम कैसे करेंगे, क्या करते हैं, what are the type of surgeries, what are the prerequisites? I want to cover them all in this session. Next session तो मैं उसको अभी start करता हूँ बिल्कुल इसके फौरन बाद, और मैं चाहता हूँ कि इसी में ख़त्म कर लें एक ही सेशन में, क्योंकि concept काफ़ी interrelated है. तो I'll be back in a moment.